friends, welcome back to our channel. Today we will be discussing about the basic loop structures, that is while loop, and doing some examples so that we will be very clear about the concept of while loop. So basically while loop is an iterative statement, that is a decision control structure. So decision control structure में while loop क्या है? That is of type iterative. Iterative means कि अगर हमें कोई टास्क कंप्लीट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उस टास्क को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी. सो व्हाइल लूप प्रोवाइड्स सच अ मैकेनिज्म सो दैट वी कैन repeatedly execute the task until the condition is true. Now while loop is unbounded. Unbounded means in this case the programmer does not know exactly how many times a program executes. Actually यहाँ पर जो प्रोग्रामर है या यूजर है उसको exactly नहीं पता होता है कि उसका जो प्रोग्राम है या जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे. सो इट इज अननोन एक्चुअली. सो इन दिस केस इट हैज नो फिक्स नंबर ऑफ लूप्स. इनिशियली हमको नहीं पता होता है कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे. So it is dependent on the condition actually. So it is also known as indeterminate. Indeterminate loop भी हम इसको बोलते हैं because of this unbounded condition. So it is also known as condition control loop. Condition control loop means अगर हमें ये नहीं पता है एडवांस में कि हमें अपना लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, so in this case we will say that the program is condition controlled. So it means it can loop in the indefinite loop, or we can say it is dependent upon the condition. So in this condition को हम किस तरह से mention कर सकते हैं? So condition can be defined using the sentinel value. Sentinel value क्या है? एक special value है जो कि हमें बताएगा कि हम अपने loop को कब end करना है. बिकॉज क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता होता है कि हमारा लूप किस कंडीशन के बेस पे एंड होगा. सो यूजर को एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, एक ऐसी स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो लास्ट कंडीशन क्या है, वो लास्ट वैल्यू क्या है जहां पर हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो दैट वैल्यू इज नोन एज सेंटिनल वैल्यू. अब इस केस में जो सेंटिनल वैल्यू है वो -1 हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 9999 एंड सो ऑन. सो इन पाइथन व्हाइल स्टेटमेंट के लिए हमें व्हाइल कीवर्ड को यूज करना होता है, and while statement is used to iterate over a block of code until the condition is true. तो यहाँ पर हम एक while कीवर्ड यूज करते हैं, उसके आगे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें हमारी एक स्पेशल वैल्यू सेंटिनल वैल्यू होती है जो कि इंडिकेट करती है लूप के एंड को. अब जब भी सेंटिनल वैल्यू आएगी उस टाइम पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा. सो सेंटिनल वैल्यू कैन बी अ -1, इट कैन बी 0, इट कैन बी 9999 और एनी वैल्यू that user provides. Then condition can be count that is not equals to -1. So in this case हमने एक condition put की, then condition is कि count की जो value है वो क्या होगी, जब तक -1 नहीं होती है तब तक while loop हमारा execute करता रहेगा. इसके आगे अभी मैंने कोई भी statement नहीं लिखा है. So it means there is a block of statement जो कि execute हो सकते हैं. So in this case there is a variable count whose value is not -1. तो in this case अगर ये वैल्यू -1 नहीं होती है तो इस केस में हमारा जो लूप है वो कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. सो दिस इज अ सेंटिनल वैल्यू, और जिस टाइम पर हमारी जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी उस टाइम पे हमारा जो लूप टर्मिनेट हो जाएगा. देन सिंटैक्स इज statement x. so this is a statement x. initially हम एक statement को execute कर रहे होंगे and this be called as a initialized value जो कि हमारी एक counter value हो सकती है. then उसके बाद हम while loop को यूज करेंगे. while loop क्या है, एक while कीवर्ड है, then उसके आगे हमने condition mention करनी है, then colon यूज करना है. colon यूज करते ही हमें block स्टार्ट करना है while के लिए. so there is a statement block and finally when the condition is false then we have to terminate from the loop and finally हम क्या execute करेंगे, statement
y यूज करेंगे. So this is a flow chart for while loop. Statement X, then condition, if the condition is true, then statement block is execute and then update the condition expression, and finally check the condition again, and this goes on until the condition is true. When condition is false, then we directly execute the statement Y. So इस केस में हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सिंटेक्स है वो किस तरह से वर्क करता है. देन देयर इज एग्जांपल. एग्जांपल इज व्हेन i इज इक्वल्स टू 0. सो इनिशियली i की वैल्यू क्या है, 0 है. जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है, ओके, देन हम क्या करेंगे, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे. फर्स्ट इज द एग्जीक्यूशन पोर्शन, जब हम प्रिंट कर रहे हैं i की वैल्यू को एंड देयर इज अ अपडेशन इन द काउंटर वैल्यू, है ना. इससे क्या होगा, अगर मैं इस कंडीशन को पुट नहीं करती हूँ, सो i इज ऑलवेज 0, सो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. तो हमें एक अपडेशन चाहिए जिसकी वजह से हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं. अदरवाइज ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रन करता रहेगा. ओके, देन so now there are some conditions. So conditions are, first it's a pretest. So it's a pretest means, it means first of all we have to check a condition, and if the condition is true then we can execute this statement block. Otherwise अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो उस केस में हम एक भी स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. सो इट्स अ प्री टेस्ट. सो बिफोर एग्जीक्यूशन हमारा टेस्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस लूप में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ओके, देन नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा दैट इज अगेन n+1. अगेन n+1 मीन्स कि n नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा एंड 1 is for false condition. Next is statement block executes n time. जो हमारा statement block है ये n time execute होगा. जो loop control variable है ये भी हमारा n time रहेगा क्योंकि हमें updation करना है. तो initially if the i value is 0, ठीक है, अगर i की value initially 0 होगी, then after updation of i up to n number of times, तो ये क्या होगा, इसका भी जो अपडेशन है दैट इज इक्वल्स टू n एंड द मिनिमम इटरेशन इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मिनिमम इटरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नाउ द प्रोग्राम इज टू सम ऑल द नंबर्स प्रोवाइडेड बाय user. So in this case we have to sum all the numbers that is provided by the user. So जो भी numbers user हमें देगा वो सारे numbers हम calculate करेंगे, sum करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता initially कि user हमें कितने numbers देगा. It can be 2, it can be 3, any numbers. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक sentinel value लेनी होगी जिस पर आते ही, मतलब user ने जैसे ही -1 प्रिंट किया, इनपुट दिया, उस केस पर हम टर्मिनेट करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेना बंद कर देंगे. सो इट मीन्स अगर यूजर 2 नंबर्स के बाद -1 इनपुट देता है, सो इट मीन्स वी हैव टू टेक ओनली 2 नंबर्स. नाउ सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे यूजर से फर्स्ट नंबर. सो इंट इनपुट एंटर नंबर, यहाँ से हमें एक नंबर मिलेगा दैट वी स्टोर इन द वेरिएबल n. So now if n is not equals to -1, हमें एक लूप लगाना है, while loop. हमें नहीं पता कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा. सो हमने चेक किया कि जो हमारा n है दैट इज नॉट इक्वल्स टू n. अगर n नॉट इक्वल्स टू 1 -1 रहता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सम करना होगा. So initially हम एक वेरिएबल लेते हैं sum that is equals to 0 and sum is equals to sum plus n. So if the user inputs the first value 2, so it means 0 plus 2 is equals to 2. Then we want another number from the user. So हमने एक नंबर लिया यूजर से. Now हम फिर से चेक करेंगे n is not equals to -1. Again if the user gives 4 here, then 4 is not equals to -1, it means the condition is true again. Then sum is equals to sum plus n, and इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे टिल जब तक कि हमें नंबर्स यूजर प्रोवाइड कर रहा है. फाइनली जब हमें यूजर -1 देता है तो उस केस में हम टर्मिनेट करेंगे, हमारा लूप टर्मिनेट होगा, और फाइनली वी प्रिंट द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स दैट यूजर प्रोवाइड्स. सो इसको हम एक कोड के थ्रू भी देखते हैं. नाउ sum is equals to 0, print to n press -1.
int is equals to int input enter number, while there is a condition, then sum is equals to sum plus n is equals to int. Okay, this is a code for calculating the sum of all the numbers that provided by the user. Now I'm running this code and enter number. So first number I input is 2. Okay, next number is 4, next number is 6. Okay, 4, next number is 6, next number is 7, then -1. To terminate the loop I input -1. So total sum is 19. So this is the output of this program. Now let's try some problem. So problem is program to count all the patients a doctor diagnosed in a day. So in this case, in this problem, we have to count all the patients a doctor diagnosed in a day. तो एक दिन में डॉक्टर जितने पेशेंट्स को देखता है उसको हमें काउंट करना है. So we have to write a program so that जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं डॉक्टर के पास, सो इन दिस केस वी हैव टू आस्क फ्रॉम द डॉक्टर, डू यू डायग्नोस अ पेशेंट. अगर वो यस कहता है तो इट मीन्स वी कैन काउंट दैट पेशेंट, अदरवाइज नो. सो इसके लिए हम कोड करते हैं. टू डू दिस what we have to do is, first of all we take the input from the doctor. So in this case we take a answer is a variable that takes the input from the doctor. So input is, we ask from the doctor, do you want to diagnose a patient? Answer can be in the yes or no format. Okay, now आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी डॉक्टर ने yes और no मेंशन किया होगा. So it means we have to check the condition. So we have to mention the while loop. So if the answer is equals to y, then what we have to do, we can print the statement doctor diagnosed the first patient. डॉक्टर डायग्नोज द पेशेंट, डॉक्टर ने पहला पेशेंट जो है वो डायग्नोज किया. नाउ वी कैन आस्क फ्रॉम द डॉक्टर अगेन, डू यू वांट टू सी अनदर पेशेंट. सो व्हाट वी कैन डू इज, डू यू वांट टू डायग्नोज अनदर पेशेंट. Okay, if doctor say yes, so it means what we have to do is the loop goes again and again. So it means doctor diagnosed another patient. Now to count the number of patients, we have to use the count variable. So initially count variable is equals to 0, and then we can increment the value of count is equals to count plus 1. तो यहाँ पर मैं काउंट ले लेती हूँ. काउंट वेरिएबल इनिशियली वो 0 रहेगा, 0 नंबर ऑफ पेशेंट को उन्होंने डायग्नोज किया. आफ्टर दैट फर्स्ट पेशेंट को डायग्नोज करने के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट प्लस 1 हो जाएगी. सो नाउ ये हमारे लूप कंप्लीट हो जाएगा. एंड फाइनली वी कैन प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स द यूजर द डॉक्टर डायग्नोज, दैट इज नंबर ऑफ पेशेंट्स doctor diagnosed is equals to what? That is count. The total count is this one. Now we have to run the program. Now, do you want to diagnose a patient? So in this case, what we have to give the input, it can be y or n. So again we want to run the program and we give the input y. So doctor diagnosed the patient. Again, do you want to diagnose another patient? So yes. So again doctor diagnosed the patient.
Again, we ask the question from the doctor that do you want to diagnose another patient? So yes, again. Okay, so 3 patients doctor diagnosed till now. Now I say no. Doctor say no. Now the number of patient doctor diagnosed is equals to 3. So this is the way we program using the while loop. So that's for all today. If you have any problems or any questions, you are very free to ask those as a comment, and we will be very happy to answer you. And please stay tuned to our channel and subscribe for further videos. Have a very good day ahead. Thank you very much.